वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्टॉक मार्केट्स विद केआर में आपका स्वागत है। एंड टुडेज एजेंडा इज दिस। तो आज हम लोग जो वीकली एनालिसिस है, we'll combine that with the sectoral analysis, and we'll start in a minute. So to add to it, we'll also do monthly here. And just a quick disclaimer, I'm not SEBI registered. I don't give recommendations or tips. Everything here is for edu and info purposes only, and I'm not giving any tips or anything, just letting you know. During this live stream, if you have any questions, your first best option is to just use YouTube chat. Otherwise, if that doesn't work, you can send me a message or you can tweet me at Markets with KR on Twitter. This is Stock Markets with KR on Instagram, or you can send me an email and I'll be happy to help you. So starting things off, and I'll periodically be checking the live chat, okay? So make sure that you're active on there because it helps. But starting things off, okay, we're gonna go with Nifty first, and I will have to hide my horizontal lines because otherwise it looks like very untidy. But I'll just do that, and if you want, I'll show you these lines, but I just have to hide them so it's easier to see. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्च का मंथ था, this was the March candle. It was a near perfect doji. Right here we'll be able to see that the open was 702 and the close was 690. So just a 12 point difference between the open and the close. तो मतलब doji हो गया है वो, और अभी 80H के आसपास डोजी है, so that's not a good sign. But so far April month is looking okay-ish. Obviously April का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है वैसे तो, so it's a bit tricky to judge like that. But overall monthly पे it is looking okay. RSI is above 60 and the general trend is obviously bullish. But just letting you know that हम लोग देख सकते हैं कि previously when the market has recovered this sharply, unless there has been some sort of a dream run, I think, for example this part here, unless ऐसा कुछ होता है, we have seen the market moving sideways a little before resumption of the uptrend. So थोड़ा और उसमें देखने की बात है कि whether it will continue this uptrend or not. But as of now, given that ये doji जैसा कैंडल है, indecisiveness, I think unless it's able to stay sustainably above 15,000, वो sentiments I think उतने add नहीं हो पाएंगे, which is my only concern. Now if we go to the weekly chart of Nifty, we can see कि 60 RSI का support मिला था, and we can also see 20 simple moving average support. I don't use 20 SMA that much, but it is still a good indicator. It's still a good average to use. And because 50 MA और 200 MA के बहुत ऊपर आ गया है market, I thought I'd use some lower time frame indicators now. So another indicator that we can use is either 8 moving average or 13 moving average. So I'll just show you वो कैसे दिखते हैं. 8 MA ऐसा दिखता है कुछ, और जो 13 MA है वो कुछ ऐसा दिखता है. 13 MA we can see this is what it looks like. 13 MA I personally use a lot, but फिलहाल तो because हम लोग swing view देख रहे हैं, मैं 50 रखूँगा और मैं इसको 200 कर दूँगा. So I'm just letting you know that these are the various moving average settings that you can use if you want to. So weekly पे again it looks decent. My only thing is कि ये इसके ऊपर sustain करना चाहिए मेरे हिसाब से 14,900 के ऊपर, and eventually हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जोन है, मैं हाइड कर देता हूँ, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ये जो जोन है उधर बहुत सारा प्राइस रिजेक्शन हम लोग को दिखा है. क्यों? क्योंकि वी कैन सी दैट आफ्टर प्राइस केम हियर इट जस्ट केम डाउन. सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है ना कि 15,000 के ऊपर प्राइस हैज नेवर रियली सस्टेनेबली क्लोज्ड एक्सेप्ट फॉर दिस फेब्रुअरी का मंथ, एंड मार्च में थोड़ा सा वो एक फेब्रुअरी का हफ्ता और एक मार्च का थोड़ा हफ्ता, उसके पहले कभी भी सस्टेनेबली 15,000 के ऊपर उतना अच्छा क्लोज नहीं मिला है, विच इज़ काइंड ऑफ कंसर्निंग, क्योंकि इट मीन्स दैट 15,000 के ऊपर देर इज
heavy selling happening as of now, in my view. Again, this is all in my view, क्योंकि all the candles are coming down from that region. Daily chart पे अगर हम लोग देखते हैं, if we do the daily chart, 200 MA is obviously quite a lot down, so hidden रख रहा हूँ मैं अभी. डेली पे हम लोग देख सकते हैं कि डिसेंट दिख रहा है, नॉट बैड. अगर हम लोग जो डेली लास्ट वीक का जो हुआ वो देखते हैं, देन वी कैन सी दैट इट्स अ गुड सपोर्ट फॉर द 50 मूविंग एवरेज लाइन. आई थिंक दैट्स अ गुड साइन. पर अगेन हम लोग देख सकते हैं कि 14,900 to 15,000 का जो रीजन है, दैट हैज एक्टेड एज अ वेरी strong resistance, because price has really not even tested above 14,880 or so in the past 2 or so weeks. So काफ़ी वो पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफिकल्ट है, बट दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि 15,000 के ऊपर जाना, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट if the market is to really test the all time highs. So that's my view on that. अभी फटाफट से if we go on an hourly chart पे हम लोग करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि आवरली पे इट हैज़ ब्रीच्ड द 200 मूविंग एवरेज. अनदर इंटरेस्टिंग साइन इज कि देयर वाज अ डेथ क्रॉस दैट हैड हैपेंड हियर. मतलब जो शॉर्टर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था. हम लोग क्या देख सकते हैं इधर कि 50 MA वेंट बिलो 200 MA, दैट इज अ बेरिश साइन, एंड नाउ थिंग्स अपीयर टू बी टर्निंग. सो आई थिंक थोड़े नेक्स्ट फ्यू सेशंस में मे बी we'll see a golden cross happening if the bullishness continues, and that will obviously be a good sign. So Friday के price moves हम लोग क्या देख सकते हैं कि gap up open हुआ, gap fill किया, previous close से support लेके, then it really went up. Honestly, I was not expecting such a sharp move. I mean, partially not expecting. और जो इतना बड़ा मूव था वो तो अनएक्सपेक्टेड ही था, ऐसा कह सकते हैं. मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रीटेस्ट ऑफ द हाई, बट दिस वॉज वेल अबव द ओपनिंग हाई, सो इट लुक्स प्रिटी गुड. नाउ माई ओनली कंसर्न, एंड दिस इज द 15 मिनट चार्ट. नाउ 15 मिनट का चार्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो 880 का लेवल है उधर पे ही आया है, एंड इट्स अ नॉट सो गुड लेवल, बिकॉज वीव सीन सम सेलिंग हैपनिंग एट दैट एरिया. And another sign we can see, RSI was very high at this time. जब भी previously 880 के आसपास था, RSI was almost 80 and now RSI is 68. So RSI में भी around 10 पॉइंट का डिफरेंस है, which one way to think of is कि momentum कम है, another way to think of is कि इतना हायर लेवल पे पहुंचने में उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं लगा है, which is a good sign because it shows that the market has general positivity. So there are two interpretations of that depending on how you want to take it. But फिलहाल तो जो क्लोज है वो रेजिस्टेंस वाला क्लोज है, और ये एक्चुअली एक ट्रेंड ऑब्जर्व हो सकता है, क्योंकि वी कैन सी कि many previous closes of Nifty have been right around resistances and it's managed to open gap up after that. So देखते हैं how it happens. Now coming to Banknifty में भी सेम हम लोग करते हैं, and after that we will do a sectoral analysis. So I'll just quickly breeze through it. It's been 11 minutes since the live session, so I don't want to make it too long also. पर हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके हम लोग को पूरा एनालाइज करना है आज, so that's why just bear with me. Banknifty में मंथली I feel it looks a little better than Nifty, क्योंकि निफ्टी में जो डोजी था दैट शोज क्वाइट अ लॉट ऑफ इनडिसाइसिवनेस. बैंक निफ्टी में क्या है, इट इज शोइंग गुड प्रीवियस 80H के आसपास का सपोर्ट, सो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन. बैंक निफ्टी RSI इज ऑल्सो 61 एंड इट्स नॉट हैंगिंग इन द एयर निफ्टी जैसे, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से. वीकली चार्ट देखें तो वीकली RSI 60 के आसपास ही है, and if we see again weekly right around that previous all time high. डेली करते हैं अगर हम लोग फटाफट से, if we look at the daily chart then we can see 50 daily moving average के नीचे है. हाँ, agreed, that is definitely the case, but if it like right now अभी ये कंसोलिडेट जैसा हो रहा है, एक बार ये रेंज के ब्रेकआउट होता है, आई थिंक उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव दिखा सकता है. एंड RSI is 46, so my view, one sort of conclusion that I can draw here is that Bank Nifty is relatively slow, has performed relatively slower compared to Nifty, so maybe it may outperform soon. Okay, maybe it may outperform soon, and
प्रीवियसली जब पहले ऐसा हुआ था तभी बैंक निफ्टी ने सच्ची में आउट परफॉर्म किया था। ये वाला जो पार्ट था तभी मैं बोल रहा था कि रादर ये वाला पार्ट कि निफ्टी इज गोइंग अप, बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू गो अप दैट मच, सो मे बी बैंक निफ्टी विल प्ले कैच अप, और वैसा सच्ची में हुआ था। सो मे बी वी सी समथिंग लाइक दैट, एंड इफ वी डू, व्हेन वी डू, आई थिंक इट्स बेस्ट टू स्टे इन्वेस्टेड। बैंक निफ्टी के हम लोग आवरली चार्ट देखेंगे तो 200 MA स्टिल क्वाइट फार, which is not good, but hourly पे 60 RSI is there, again resistance के आसपास ही है, 34,000 का साइक रेजिस्टेंस भी है, पर ठीक है वो सब तो होता रहता है। अगर हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखें, once again right around resistance, I think once it breaches by the looks of it here, I would say कि एक बार 34,500 के आसपास उसके ऊपर तोड़ता है तो और 500-600 पॉइंट और, then maybe on a swing perspective maybe Bank Nifty will be a good bet. As of now of course थोड़ा overbought के region में है, but that is fine. Minor pullback can't be ruled out in my opinion. Coming to the open interest, so हम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट का आइडिया उतना अच्छा नहीं आ सकता क्योंकि एक्सपायरी था last session, but still we can try, we can always try. I have my view on the chat by the way, so if you have anything to say, if you have anything to ask, if you have anything to add, anything, प्लीज़ चैट में डाल दो, मैं देख सकता हूँ अच्छे से। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये निफ्टी का मंथली है, निफ्टी का मंथली ओपन इंटरेस्ट है, एंड आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक्सपायरी अब भी हुआ है, सो आई थिंक उसके वजह से। पर ठीक है, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि 14,500 पे अच्छा पुट राइटिंग है, विच इज़ अ गुड साइन आई थिंक, और 15,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग है, विच इज़ अ नॉट गुड साइन, बट देन अगेन वो सब तो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। ओवरऑल पुट राइटिंग इज़ मोर दैन कॉल राइटिंग, विच इज़ अ गुड साइन, बट PCR इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, सो लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी हाउ इट गोज। फ्यूचर का OI विच आई लाइक टू लुक एट पर्सनली, क्योंकि इट जस्ट शोज हाउ मच मनी इज देयर इन द मार्केट्स राइट नाउ, वो थोड़ा सा कम हुआ है, पर ठीक है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ सम जनरल मार्केट, ब्रॉड मार्केट थिंग। और बैंक निफ्टी में भी जनरली तो ऐसा ही होता है, इट्स सिमिलर, बैंक निफ्टी इज नॉट दैट मच डिफरेंट, स्पेशली बिकॉज बैंक निफ्टी डेटा पॉइंट्स आर लिटिल डिफरेंट दैन निफ्टीज, बट ठीक है, व्हाटएवर, वी कैन स्टिल सी इट। ये देख सकते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का कुछ ऐसा लगता है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट आई थिंक कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है बैंक निफ्टी में। मैं मंथली स्विच करता हूँ अगेन, आई थिंक कॉल राइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, विच इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ साइन। PCR is little lower, in fact it's almost half, so Bank Nifty I think is very differently placed than Nifty. OI also काफ़ी कम हो गया है, so I think the two indices are quite different from each other. Now switching things up, now we've done monthly, weekly, daily, intraday, OI कर लिया, अभी sectoral analysis करेंगे। Sectoral analysis में मैं एक approach use करूँगा, I will just, 1 minute, I'll just change the watch list to the sectors. Sectoral analysis में I'm going to follow something called as grandfather, father and son. This is something that this stock market trainer, his name is Vishal Malkan, he has a YouTube channel also, तो वो भी आप देख सकते हो, उसने किया है, and this will be mainly based on what he talks about, like his grandfather, father, son view, क्योंकि I think it's a good way to look at the markets, so you can look at his videos also if you want to see. Not endorsing, not promoting or anything, but I'm just saying कि आप वो भी देख सकते हो। Now I am trying to choose which sector I should start with first. So one good way, and this is something that I just thought of. Okay, this is my broker का terminal, and you can see I have all the sectors के जो listing EOD listings होते हैं वो इधर है मेरे पास। So here we can see कि Nifty was up 1.2, Bank Nifty up 1.6. What we are looking for, I think, here is which sector performed greater than the broad market. 1.2 से ज़्यादा किसने परफॉर्म किया? ऑटो ने परफॉर्म किया है, कमोडिटीज़ ने परफॉर्म किया है, CPSE, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज काइंड ऑफ, फार्मा नहीं कर पाया, मेटल ऑब्वियसली किया है, मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीडिया ने किया है, PSU बैंक ने किया है, प्राइवेट बैंक ने किया है। सो IT ने नहीं किया, IT में मे बी देयर इज सम वीकनेस स्टिल, IT वी हैड एनालाइज लास्ट वीक,
So let's start with the highest metals में I don't think उतना अच्छा move मिल पाएगा क्योंकि already काफ़ी ऊपर है, पर ठीक है, there is no harm in trying at all. मेटल हम लोग देख सकते हैं कि एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है. सो इफ इट्स अनेबल टू ब्रीच दिस लेवल देन इट माइट फॉर्म अ डबल टॉप ऑफ सॉर्ट्स. तो देखते हैं हाउ इट गोज. वीकली देखना है तो ये है, इट्स लाइक अ ब्रेकआउट, बट this all-time high resistance might come there. Momentum is good, everything is good. So metal, just for information, अच्छा है, but as a trade I think it's a very poor ROI trade right now. Next we can look at something like Nifty Auto. Let's look at Nifty Auto. We'll look at Nifty Auto. Nifty Auto monthly पे we can see RSI is at 60, right around 60. It's breached the 50 monthly moving average, which is a good sign. Weekly chart पे, and I'll just see how long it's been. It's been 18 minutes, almost 19 minutes since we started. I hope that I'm not boring you too much. If I'm not, then please chat में लिख दो, मेरे को बता दो कैसा चल रहा है, so I can also understand. CNX ऑटो या निफ्टी ऑटो 10,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास भी है. वीकली RSI 60 has been breached, which is not a good sign, but it is right around previous resistance का support plus psych level support, so it's not very poorly placed. Now on the daily chart we can see consistently ऊपर जा रहा है, RSI भी 40 क्रॉस किया है, so maybe it can be a decent pick. Now what stocks can actually be good? I'll start with one of the most common ones, which is Maruti. तो मारुति का हम लोग पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं कि कैसा दिखता है. And we can see 50 DMA has been rejected, 50 monthly MA has been rejected, which is not a good sign. Weekly पे it is right at 50 MA, so it's not bad at all. And daily पे 200 MA resistance. So I think अगर 7,000 levels के ऊपर जा सकता है. RSI is also 40 on the daily chart, so I think if it's able to sustain above 7,000 psych, maybe it will do good. Next stock that we have here is Tata Motors. Tata Motors में there is a good news based event also. वो लोग के sales और सब के कुछ उसके related है. So Tamo, we can see 50 moving average on the monthly chart. It has crossed 60 RSI, 200 MA also crossed, which is good. Coming to the weekly chart, we can see that it's sort of bottoming out, पर शायद इधर से support ले रहा है. So maybe I think 314 or something, around 5 to 7 points more, and maybe it will show us some good confirmation. इसको अगर ब्रेकआउट से ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट से कर सकते हैं, विच इज़ नॉट समथिंग आई पर्सनली लाइक टू डू बिकॉज RR गेट्स अ लिटिल स्क्यूड नेगेटिवली, पर दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन. दैट वाज द वीकली चार्ट. डेली चार्ट पे वी कैन सी कि काफ़ी नैरो हो गया है और डोजी स्पिनिंग टॉप वैसा इनडिसाइसिव कैंडल्स बना रहा है. सो आई थिंक इट माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर अ स्लाइटली लार्जर मूव इफ इट हैपन्स. इफ द सेक्टरल सेंटिमेंट इज गुड, मे बी इट विल बी लुकिंग फॉर अ स्लाइटली लार्जर मूव. सो I think it's good to have it in our radar. Now there are obviously other stocks as well. Jamna Auto, it's not an auto stock per se, it's an auto ancillary company, but this is a stock that we'd spoken about also. This is a stock that I've purchased and I'm holding. This is what it looks like, and I'm also kind of bullish on this as well. We can see good 50 MA support इसमें भी. और बाकी कौन से सेक्टर्स देख सकते हैं, ऐसे ये सब काफ़ी सेक्टर्स है. आई थिंक स्टॉक्स का इंडिविजुअल एनालिसिस करना तो काफ़ी ईजी है. FMCG अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग लेट्स IT देख लेते हैं, बिकॉज इफ IT इज अंडर परफॉर्मिंग एंड if IT performs well after that, then शायद there is a good scope. Slightly contrarian view रखते हैं हम लोग. Monthly पे does not look good, so maybe IT's underperformance is justified. I don't know. हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वीकली का चार्ट है उस पे शायद वीकली के चार्ट पे it might be forming like a triangular pattern or something. Might be forming a triangular pattern of sorts. So maybe
maybe this, once it breaches this, once it breaks out above this, maybe शायद कुछ और positivity देखने मिल सकती है. But IT, I think the underperformance is sort of visible now. And next, what we can look at is we can look at Nifty commodities, because I think that would sort of work very well with how our next one is going to be a commodity, which is gold. So Nifty commodities में I'll go to the monthly chart first, and we can see it's I think made an all-time high, which is great. RSI obviously well above 60. Weekly chart पे also it is broken out, so we can see कि इधर अगर ट्रेंड लाइन जैसा ड्रॉ कर सकते थे वो था. एक और था व्यू, एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ फ्लैग पैटर्न. इधर ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, थोड़ा नीचे आके ब्रेकआउट. सो इट can sort of be classified as a flag pattern as well, but देखते हैं. On the daily chart, RSI has just crossed 60. It's a pretty good breakout, so maybe commodities will also be good. Now next I want to do gold. Okay, gold. Now ये सब जो sectors थे उसमें कौन सा चूज करना है, कौन सा अच्छा है, अगेन उसके लिए this is not this is a slightly shorter video, क्योंकि अगर वो पूरा करना है तो उसमें थोड़ा और टाइम जाता है. And time, I don't want to stretch this video. This is already 24 minutes. इससे ज़्यादा मेरे को नहीं करना. पर निफ्टी कमोडिटीज़ अच्छा दिख रहा है. And so do a few other sectors. ऑटो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. But based on Jamna Auto, maybe auto ancillaries might be something worth looking into, क्योंकि many auto stocks are showing some signs of hesitation. I think मारुति में भी देखा, टामो में भी देखा, हीरो और सब मैंने देखा नहीं है फिलहाल. But that is something also that you can look at. I will also be looking at it. Gold, we can see it's bouncing from the support zone. काफ़ी अच्छा strong bounce था. डेली देख सकते हैं हम लोग, काफ़ी 2 दिन का एक almost breakout जैसा इसने दिखाया है रेंज का. So I think gold looks quite good, bouncing right from the fib level. So gold is looking good, and let's see how it goes. So does anyone have any questions, anything to add, anything to say? If not, I will just end the stream here, क्योंकि मेरे को और एकदम लंबा नहीं खींचना है. Everyone has things to do, including myself. I'll just show you my levels for the day, rather for the week. अभी निफ्टी में मैंने ना एक ट्रेंड लाइन जैसा बनाया था, हम लोग देख सकते हैं. मैं एक्चुअली आवरली पे कर देता हूँ, सो आई थिंक वो थोड़ा बेटर दिख जाएगा. It was making this sort of pattern. It was moving within this range, so it has broken out of that. पर ये काफ़ी strong resistance है, देख सकते हैं कि I've got 2 horizontal lines here. So these are some levels that I'm looking at to trade Nifty. And basically इसको interpret कैसे कर सकता है कि अगर इसके above trade किया, तो अगर 14,900 के above trade किया, there is a good chance that it can test between 14,960, so around this level to this level. If it rejects this, अगर ये level reject करता है, maybe it can try testing for starters this level 14,830. 14,830 भी reject किया, maybe it's going to retest 14,780 or so. So that is how you can interpret these levels. That's how I interpret these levels. So that's about it for this one. And if you have any questions, if you want to know anything else, you can tweet me, you can DM me, you can email me, you can chat, you can comment, do whatever you want, and I will be happy to help you and answer. Remember, follow the process, don't chase the outcome. And that's it for this one. See you in the next.